Yeah, dear students, in today's lecture, I'll explain you about the quick review of molecular basis of inheritance. और इसके लिए मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो देखिए, लाइक हम अगर मैं आपको स्टार्टिंग से जैसे हमने पहले चैप्टर से किया था, तो इस मतलब पहले टॉपिक से किया था। सो आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हेयर यू विल चेक दैट सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि डीएनए के बारे में, डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और डीएनए इज द हेरिटरी मटेरियल और इट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था जो माइस पे किया था, दैट समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम दिस स्मूथ किल्ड पार्ट टू द रफ वन। और वो चीज़ क्या है जो बाद में वो ऑसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैककार्टी ने बताया कि डीएनए इज द हेरिटरी मटेरियल। और अगर आप उसके बारे में और डिटेल में अगर हम देखें देखो मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे इस माइंड मैप में बताया हुआ है कि द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। सो हेयर जब उसको हमने दिखाया कि स्मूथ स्ट्रेन जो डिप्लोकोकस निमोनिया का हो सकता है उससे से जब इंजेक्ट करते हैं माइस में, माइस डाइस। रफ डालते हैं तो माइस जिंदा हो जाता है। हीट किल डालते हैं तो माइस फिर जिंदा हो जाता है, लेकिन हीट किल्ड और रफ डालते हैं तो माइस जो है मर जाता है। सो कंक्लूजन था कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन टू रफ स्ट्रेन। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। और उसके बाद ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमने दिखाया कि हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में आपको ये था कि यहाँ पे हमने P32 और S35, सो P32 से डीएनए को लेबल किया था वायरस के, और S35 से उसके प्रोटीन को किया था। और हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने तीनों प्रोसेस दिखा के ये देखा था कि एक्चुअली डीएनए जो है मीन्स जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है, कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है। और हर्शियन चीज का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया था। देन इसके साथ साथ में हम अगर बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के साथ टाइप्स ऑफ आरएनए की भी, तो आरएनए में मैसेंजर आरएनए होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए जिनका काम स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल होता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है। और एसआरएनए और सॉल्युबल आरएनए इट ब्रिंग्स सम अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। और रेप्लिकेशन के अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन फोक बनता है। मैसल्स एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट दिया था और सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन होती है। देन नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स की बात करते हैं जो कि पॉलीमर्स हैं, तो उसमें दो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एंटी पैरेलल होती है डीएनए की, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। दोनों चेन राइट हैंड फैशन में होते हैं और प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर। देन सिमिलरली जब हम इनको ट्रांस दिस रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसके फीचर्स होते हैं, ट्रिपलेट होता है, अनएम्बिगुअस होता है, डीजेनरेट होता है, कॉन्टिग्यूअस और यूनिवर्सल रहता है। देन नेक्स्ट अगर और हम इसकी डिटेलिंग में अगर हम चलते हैं जीन एक्सप्रेशन की, तो हमने जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन में आपको साथ में लैक ऑपरेंट भी बताया था। और जेनेटिक कोड में डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस इन एमआरएनए व्हिच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देन लैक ऑपरेंट में स्ट्रक्चरल ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेसर, इंड्यूसर होते हैं जो इसको ऑन और ऑफ करने में हेल्प करते हैं। और देन नेक्स्ट कम्स अबाउट द लैक ऑपरेंट का ही है कि जब रिप्रेसर एमआरएनए है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड होता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे बाइंड नहीं होने देता है। और बट अगर रिप्रेसर मॉलि एमआरएनए के साथ इंड्यूसर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज अटैच हो जाए या लैक्टोज अटैच हो जाए तो फिर वो रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करके
ZYA जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, Y परमीएज बनाता है और A ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है। और ऐसे करके ये ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले जैसे कि कोई भी एंटीकोडोन जो होता है टीआरएनए का, तो ये 3 साइट्स होती हैं इनकी। ए साइट होती है, पी साइट होता है, ई साइट होती है। राइबोसोम का ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट है। सो सबसे पहले ए साइट पे जो है उसमें C3' एंड पे अमाइनो एसिड अटैच होता है, और जो नया टीआरएनए होता है वो पी साइट पे आता है। फिर पी साइट और ए साइट पे जो अमाइनो एसिड होते हैं उन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जो खाली वाला ऐसे ये फिर यहाँ से जब ये वाला टीआरएनए जो है ये पी साइड से ए साइड पे आएगा और ये बॉन्ड इसके साथ बना है तो ये वाला वेकेंट हो जाएगा, ई साइड से रिमूव हो जाएगा। ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो इस वाले में बताया है दोनों चीज़ों को कि कैसे बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्शन करता है बैक्टीरियो की, और उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि S35 रेडियो एक्टिविटी जो है that was not detected in cells but it is present in the supernatant. Or similarly, in another case, P32 radioactivity was detected in cells and no radioactivity detected in supernatant. और जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो मेसेल्सन और स्टॉल ने किया था उसने N15 पे कुछ जनरेशन तक ग्रो किया, इसलिए दोनों स्ट्रैंड N15 लेबल थे। और उसके बाद 20 मिनट के बाद उसको 20 मतलब फिर उसके बाद उनको N14 वाले कल्चर मीडियम में ग्रो किया था अमोनियम क्लोराइड के। तो जो 20 मिनट्स बाद देखा तो हाइब्रिड आया, हैवी आया। फिर उसके बाद ये जैसे N14 15 नज़र आ रहा है। फिर 40 मिनट्स पे देखा तो उसकी रेशो में ये क्या है कि N15 जो है 15 14 15 14, और ऐसे 14 14 जो है लाइट और हाइब्रिड दोनों तरह की चेन आती है। सो ये एक क्विक मैंने आपको बताया इसमें कि कैसे हमने जो पढ़ाई अभी जो सारा चैप्टर पढ़ा है। तो एक और छोटी सी वीडियो मैं आपको इसमें दिखाना चाहती हूँ जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे देगी रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ओके। This is our timeline of the history of genetics. So far, we've covered the important milestones up to this point. Yes, we've taken a look at the work of Gregor Mendel, followed by the work of Sutton and Boveri. This was the chromosomal theory of inheritance. Later, it was Thomas Hunt Morgan who put forth his work on the common fruit fly and achieved another milestone. Now comes the next one. After Morgan gave an experimental evidence of the fact that genes for the traits are present on the chromosomes, the scientific world then got together to find out what exactly makes up these genes and chromosomes. In other words, the chemical nature of this genetic material is what everyone was curious to know about. In the same era, a British bacteriologist was busy handling his pneumococcal strains. They are nothing but the bacteria named Streptococcus pneumoniae, which are the causative agents of pneumococcal infections. Frederick Griffith found out that there is some factor that helps transform one bacterial type into the other. Let's have a look at this remarkable experiment. To begin with, we need to get introduced to the two types of pneumococcal strains. This one is a smooth strain denoted as the S strain, and this one is a rough strain denoted as the R strain. Why are they named so? This smooth strain, as we can see, has a smooth outer surface. It's the capsule around the cell wall which protects it from various threats. The presence of this capsule makes the strain virulent or strongly infectious, to be precise. The absence of such a smooth coat makes the strain avirulent or non-infectious, to be precise. Now you may ask, why is the R strain avirulent? It's the absence of the capsule which makes it susceptible to the immune cells of the host's body. Now getting back to Griffith's work, let's see what experiment he exactly performed. He first injected a mouse with the S strain, which is the smooth strain of the pneumococci. As expected, the mouse died.
Similarly, on injecting another mouse with a rough strain, the mouse survived. This was pretty much anticipated by him because the rough strain is usually the avirulent one. What was done next? Now the third mouse was injected with the S strain, but after the bacteria were heat killed. That means he heated the S strain to extreme temperatures, which killed the virulent strain and made it ineffective. So the injected mouse survived. Now comes the last part. This time, Griffith injected a mouse with a mixture of both rough strain and heat-killed smooth strain. That's right, a mixture of the rough strain and the heat-killed smooth strain. Now, what do you think would have happened? Most of us would expect the mouse to survive because both are individually ineffective or avirulent. However, to his astonishment, the mouse did not survive. How did this happen? And what do you think Griffith concluded? With this, he concluded that there is something from the S strain that was passed on to the R strain, resulting it to turn virulent. Also, do you know what he recovered from the body of the mouse? He recovered live S strain. Surprising, isn't it? This further confirmed that the R strain was transformed into the virulent S strain. He named the transforming factor as the transforming principle. He did not really know what exactly this was and hence named it just the transforming principle. But he predicted that this could be the genetic material. Was this really the genetic material or was it something else? Let's find that out in the next part. Imagine we're given a bag full of flowers, and we are told that there is one flower which has the Midas effect. Anything that the flower touches gets transformed into gold. But how will we find out which flower is the special one? All the flowers look more or less the same. Well, the only thing we can do is make all the flowers touch some object. Isn't that right? So examining every individual flower is the only option we have. The story was similar in the case of transforming principle. After Griffith concluded his experiment on the bacteria named Streptococcus pneumoniae, the science world was now curious to know more about the transforming principle. Finding the answers was not a piece of cake, though. It was almost 2 decades later that 3 scientists figured out what this transforming principle was. They tried finding out its chemical nature by testing every single component of the virulent bacterial strain. Let's move a step ahead in the timeline and understand the interesting experiment performed by Avery, MacLeod, and McCarty around the year 1944. The 3 scientists were quite fascinated with Griffith's work. Just like others, even they were curious to know what the transforming principle was. So they thought of continuing the same experiment with better research. Griffith concluded his experiment by inferring that there is some factor that's passed from heat-killed smooth strain to the rough strain, which is avirulent. This factor transforms the avirulent strain to the virulent strain. So the 3 scientists thought of planning the experiment by targeting the heat-killed smooth strain. Just like a bag filled with flowers, the smooth strain cells had various chemical components in them. And just like how we had to examine the touch of individual flowers, the scientists mixed every single chemical component individually with the rough strain. So let's say this smooth strain cell had these 4 components, A, B, C, and D in it. They mixed the component A with the rough strain and injected it in a live mouse. Similarly, they mixed all the other components individually with the rough strains and injected the mixtures in different mice. What they found at the end was only one of those components among all was effective in transforming the rough strain. It was the case in which the mouse died. The conclusion was that component D transformed the R strain. They isolated this component from the heat-killed strain and tested it further.
On chemical analysis, they could figure out that the molecules had a chemical composition similar to that of DNA. Deoxyribonucleic acid, abbreviated as DNA, was known to people by this time, but it was not given much importance. Nobody assumed that it could be such a vital part of the cell. In fact, people thought that proteins made up the cells. And it was also believed that proteins make up the genetic material. So this experiment was a huge breakthrough in genetics. Many tests were carried out to investigate this further, and the chemical composition of this transforming principle was found. It had components in the ratio that were found in the DNA molecules. So to further understand its nature, this component was tested using chemicals that break down the constituents. For example, certain enzymes like protease degrade proteins. Use of such chemicals help us identify the constituents in a given sample, as they will degrade specific molecules only. So in this case, the chemicals used to degrade DNA were used along with others, and it was found that the chemicals successfully broke down the molecules. It implied that the molecules were that of DNA. This chemical analysis helped in understanding that the transforming principle was nothing else but DNA. And this wasn't easily accepted as a fact. A few years later, another experiment helped confirm the fact that it's indeed the DNA which is transforming principle. So in this way, now you can easily understand about this very important experiment, that how they found that DNA is the genetic material. Thank you.